Okay, Bismillah Rahman Rahim and Assalamu alaikum. This is going to be lecture number 14, and I hope, for this particular offering of this course, this is going to be our last lecture. In this lecture, we are not going to learn anything new. We are going to use the same old things that we learned in the previous lectures. So, if you remember, in the previous lecture, we talked about uh, repetition structure or loops, and we mentioned two loops, the for loop and the while loop. And if you remember, like all the examples that we did in the previous lecture, so those examples were used using the for loop. So in this particular lab, we'll go through some more examples, and these examples will be done using the while loop. Okay, so we learn about the while loop, as well as we'll also learn about some interesting problems. So the first problem that we are going to solve is we are going to simulate a coin toss. Okay, so this is going to be a virtual experiment in which we are going to simulate the outcome of a coin toss. So whenever you toss or throw a coin, you get either of the two possible outcomes. You either get the heads or the tails. Okay, that is what you get. So we are not going to like simulate the actual physical tossing of a coin, and we are only going to simulate the outcome, and we are going to do it using random numbers. Okay, so whenever you toss a coin, you have two possible outcomes, the heads and tails, and all both these outcomes are equally likely. So we are going to generate uh, random values or random numbers, and using those random values we are going to simulate the outcome of this experiment. The next experiment that or the next problem that we are going to solve is we are going to simulate a die roll. Okay, so what is a die? A die is that cube shaped object with the dots on each of its face. So it has six faces, and each face has 1 to 6 dots. Okay, so the possible outcomes that you can have when you roll a die is one of those six outcomes. So you can get either 1, 2, 3, 4, 5, or 6. And for a fair die, all these outcomes are equally likely. So each outcome can occur with equal probability, just like for the toss. So if the coin is a fair coin, whenever you toss it, so heads and tails both are equally likely. Okay. So what does that mean? Like if you toss a coin, it is uh, highly unlikely that you might that like it is not very likely that you would be able to predict the correct outcome. If you toss a coin once and heads appears, then it is not like sure. You cannot say for sure that the next time when you toss the same coin you will get a tails. Okay. However, if you toss a coin a very large number of times, for example 1,000 times, then there are chances that around 500 times you will get a head and around 500 times you will get a tail. Again, the number may not be exactly 500, but it may be close to 500, like 505 times you may get heads and 495 times you may get tail, and something like that. Similarly, with a die roll, if you roll a die 6 times, that does not mean that you'll get 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, you may not get all the possible outcomes if you if you roll a die 6 times. So, but if you roll the same die a large number of times, a significantly large number of times, for example, if you roll it 6,000 times, then it is likely that you will get each number 1, 2, 3, 4, 5, and 6 around 1,000 times. Okay, so this is the frequentist probability of an event. So if you
perform an experiment a large number of times. So the number of times that you get, or the frequency of each of the possible outcomes, it approaches, that frequency approaches the theoretical or analytical probability of that particular event. Okay, so that is what it means. The final problem that we are going to solve is we are going to find all the prime numbers between 2 and n. So for example, if n, somebody says n is equal to 5000, so we would find all the prime numbers from 2 to 5000. So we'll check each of these numbers for primality. We'll see if it is a prime number or not. Okay, so we'll solve these three problems using Octave, and we'll try to use the while loop as in each of these solutions, so you get to know the while loop and you learn how to use it. Okay, so let's get started. Okay, so let's go to Octave. Let us open a new script file and let us save it as coin toss. Okay, so we are trying to simulate the tossing of a coin here. Okay, so how are we going to simulate that? So again, like we are going to simulate the outcome whenever we toss a coin. So we get on the outcome we get either heads or tails. So all we need to do in order to simulate this outcome is to generate two numbers randomly, 0 and 1. So imagine if we have a huge container in which we have equal number of chips or equal number of marbles, and on one of the marble we have 0 written, and on the other marble we have a 1 written, and we just close our eyes and pick one marble at a time from that container. Okay, so uh, since the number of marbles in both those containers is equal and it is a very huge number, so there are equal chances that we'll get a 0 or a 1 marble, a marble with a 0 written on it or a marble with a 1 written on it. So whenever we get a marble with a 0 written on it, we will say we got a heads. Whenever we get a marble with a 1 written on it, we'll say we got a tails. Okay. So since a coin toss has these two possible outcomes, that is why, like, uh, if we can generate uh, two numbers randomly, so we can like say that if we get one of those two numbers, we can say we got a heads. If we get another number, we can say we got a tails. Okay. Okay, so let's do that. So we want to simulate a coin toss. Okay, so let us call that variable as toss. Okay, and toss will have a random value assigned to it. We will assign a random value to toss. Okay, that random value would be uh, the maximum value that we'll assign to it. That would be 2. Okay, so let's see if we call the random integer function like that, what do we get? Let us clear everything. So let us call the random integer function with just one argument 2. Okay, so what do we get? Okay, so we can get these possible values 1 or 2, 1 or 2. Okay, so the maximum value that we can get is 2. The minimum value that we can get is 1. If you call the rand integer function with the argument 2, so this is what you can have. This is what you can get. You can get either 1 or 2. So this instruction will give you two of the possible values. So you can say, like, if you get 1, you can say we have got a head. If you get a 2, you can say we have got a tail. Okay. So this is what we can do. So whenever we toss a coin,
Okay, so this function will be executed. It will have one of those two possible values, 1 or 2. Okay, if we get a 1, if toss is equal to 1, okay, we can say that we have got a heads, we have got a heads, and we can increment the number of heads that we have. For example, we store the number of heads that we get in the variable heads. Okay, in the variable heads, let us initialize it to the value 0, and the number of times we get tails, let us initialize that again to the value 0. Okay, so whenever we toss a coin, how do we toss a coin? We just generate a random number with two possible values, 1 and 2. If the value is 1, and we store that value in toss, the outcome of a toss, we store it in the variable toss. If the value that is randomly generated is 1, we assume that we have got a heads, and we increment heads. Okay, else if we get other than 1, that would be 2. Okay, so then we say we have got tails, we have got a tail, and this should be a head. Okay, so what do you do when you get a tail? You increment the tails count, and then you say end. Okay, then you say end. Okay, so this is basically tossing the coin just once. Okay, so we have tossed the coin just once. And how do we simulate the tossing of the coin? We simulate it by generating two random values, by generating yeah, two random, by generating basically one random value, which can be either 1 or 2. If it is a 1, we say we have got a head, and we increment heads, which is initially set to 0. If we get other than 1, we say that we have got a tail, and we increment tails, okay, which is again initialized to 0. So this is just a single coin toss. Now we need to repeat this process multiple times. That means we need to have this code inside a loop. We need to have this code inside a loop. Okay, so you can use a for loop, that would be very easy, but you can also use a while loop. Now, how does a while loop work? So this is how a while loop works. A while loop starts with the keyword while, and then you specify a condition here. Okay, so let me write simply the condition. We'll change it. Okay, and then we want this whole code to be repeated, so we want the while loop to end here. Okay, so this keyword, this end, this is basically connected with the while loop. Okay, so while this condition is true, we have not specified the conditions yet, we want this code to repeat. Okay, we want this code to repeat. Okay, and then end. So the code that is enclosed between while and this end, which is this code from statement number 7 to 14, this code would be repeated. How many times would it be repeated? Well, that depends upon this condition. As long as this condition is true, this code would be repeated. Okay, now what is this condition? This can be any condition. Okay, this can be, for example, it can be this condition, while 1 is greater than 0. Okay, now this is a condition that would always remain true, that would always remain true. So this would become an infinite loop. This would become an infinite loop. It's never going to end. When you run this program will go on forever. Why? Because this condition is going to remain true forever. Okay, you can give it a try. So
Let's give it a try. Let's go to the command window and you see nothing. Okay, so the coin toss program is busy and it does not produce any output, so you see nothing at all. So I guess we can uh, break this program or terminate its execution by pressing Ctrl plus C. No, we cannot. Okay, Control plus pause break. Where is? No, that also doesn't work, I guess. Okay, we've got ourselves into trouble. We are not in debug mode. Uh, let's see. What can we do about it? Okay, Control plus. Okay, you shouldn't be trying such a thing the way we tried it. Okay, so right now I cannot enter any command or I cannot do anything. Okay, finally, invalid call to reshape. Finally, it has stopped. Okay, so maybe something worked. I don't know, but this was an infinite loop. Okay, this is an infinite loop. Why? Because this condition is going to remain true forever. There is no way that 1 is going to become not greater than 0. Okay, so this is going to remain true forever, and this is something, this results in an infinite loop. Okay, if you start off with a condition that is false, for example, while 1 is less than 0, say for example while 1 is less than 0, if we say something like this, now this condition is false. Okay, so when this condition is false, this loop will not be executed, will never be executed. Okay, so you can verify that. You can run this program. See, you're here, step into it, head is equal 0, tail is equal 0, while 1 is less than 0. So 1 is less than 0, this is a condition that is false. 1 is can never be less than 0. So this is false, you're not going to enter this loop. You're going to skip this entire loop. So you're here. So no instruction was executed. We can check the previous, we can look at the previous situation while 1 is greater than 0. Now this is something that is true and it would remain true forever. So if you execute this code, you're going to be in this loop forever. Okay, so heads tails is equal to 0 while 1 is greater than 0. This condition is true, so you enter the loop. Toss is equal to rand I 2. So uh-oh. Okay, so we got out of that loop. Now the value of toss was 2. It's not equal to say, okay, let's see what happened here. Nothing. Okay, let us end this session. This debugging is also not going that great. Let me, okay, let's end it. Let us go and write the proper code for this function so that we don't have these problems.
So sometimes there can be issues like these in both Octave as well as MATLAB. Right now it's still in debugging mode. It hasn't gotten out of the that mode. So let's see. Let's wait for it a little bit, okay? While we wait for it, we can make changes into the code, okay? So what do we want to do? Say for example, we want to toss the coin 1,000 times. That is what we want to do. Say for example, okay. So how can we write this code so that we can execute this code 1,000 times? Okay, so that is what we want to do, and we can do that by writing an appropriate condition here. Okay, and we cannot create that condition like out of nowhere. We need to keep track of how many times this loop has been executed. So we need to have some counter. Okay, so say for example we use a variable counter and we initialize counter to say 0. Okay, whenever this code is executed once, okay, we increment the counter. We increment the counter by saying plus plus counter, and we keep a check on the counter. While counter is less than 1,000, okay, so we want to execute this loop. We want to execute this while loop. That is what we want to do. Okay, so okay, we cannot quit the debug mode. In any case, like I hope you understand the code. What was the purpose of writing this particular code? So this particular code from line number 7 to line number 14, it simulated a single toss of a coin. How did it do that? It generated two random values, 1 and 2, and stored the outcome like one value is selected between 1 and 2. One value is selected randomly. Okay, either 1 is selected or 2 is selected. The value that is randomly selected, it is stored in the variable toss, and then we look at toss. If toss has the value 1, we say we've got a head. Okay, and we increment the heads counter. If the value stored in toss is not 1, it must be 2. So then we say we've got a tail, and we increment the tails counter. So this particular code simulates a single coin toss. Now we need to repeat this process 1,000 times. Okay, we want to simulate 1,000 coin tosses, and we want to do it using the while loop. Okay, so how does the while loop work? The while loop works like this. You use the keyword while, and then between while and this end keyword you can place the code that you want to repeat. But the while checks a condition. As long as this condition is true, the while loop will keep on executing this particular code, whatever is inside the while loop, okay, as long as this condition is true. Now, how do we create this condition? This condition has to be such a condition which can help us keep track of the number of times that this code has to execute, okay. So for that we use a variable counter. We give it an initial value of 0. When we do a single coin toss, we increment the counter, okay, and then we keep a check on this counter. While the value of this counter is less than 1,000, we want to keep on tossing the coin, and each time we toss the coin, we increment the counter, and then we check, is it less than 1,000 or not. If it is, we want to keep on tossing the coin, okay. So that is what we want to do. Once we are done tossing the coin 1,000 times, we might want to display the number of heads that we got, and the number of tails that we got. Okay, you might want to do that.
number of heads that we got and the number of tails that we got. Okay, we are still in this debug mode. What I'll do is I'll close Octave and then restart it. It's about to be closed. We want to save. Okay, is it saved already? Okay, we'll write it again if there's a problem. Say discard changes. And okay, you can go to the task manager and maybe try closing Octave from there. I hope it does not result in some serious problem. So let us find Octave. This is Octave GUI, and let us end this task. Okay, so I guess it is closed. Okay, Octave is closed. I hope there is no other process related to Octave. Okay, so you can use the task manager if some program is not responding. You can go to the task manager and you can end it from the task manager, but you should just restrict yourself to this area, apps. Okay, do not go into the processes. You may end up accidentally a process that may be important for your system to work properly. So do not go there. So we are done with that. Now let us restart Octave. Okay, so when it is restarted, then we will test our code, the code that we wrote before terminating Octave. Let us hope that it starts properly without any issues. Okay, so Octave is loading. Let us go to our, let us first clear this whole thing. Okay, let's go to our directory here, and this was the code that we were working on. Okay, so the code couldn't be saved. Okay, so this thing here, this is the code for a single coin toss. Okay, we want to repeat it 1,000 times. So how can we do that? So we have to provide here a condition that will remain true uh, when while the number of times that this code has executed is less than 1,000. Okay, so we need such a condition. Okay, that would become false once this code has executed 1,000 times. Now that means that we need to keep track of the number of times this code has executed. And how can we do that? So once the statements from line number 7 and 14 have executed, we can put here a statement that increments some counter. So for that we can have a counter variable. This would be our while loop counter. We can initialize it to 0. And when we have done a single coin toss and we have saved the result, so we can increment our counter. Okay, so we did a coin toss and we saved its result, recorded the result, and then we incremented the counter. Okay, and now we see, is this counter less than 1,000 or not? So while it is less than 1,000, while the value of this counter is less than 1,000, we want to repeat this process. Okay, initially when your program starts executing, first this line is executed, then this line, then this line, then this line, then the counter is initialized to the value 0. Okay, and when it is initialized to the value 0, so this condition is true. 0 is less than 1,000. The value of counter is 0 and it is less than 1,000. So you enter this loop and you do a coin toss, you store the result, and then you increment your counter. You say that I have tossed the coin once, and then you come back.
You check the counter, compare it 1000. If it is less than 1000, the condition is true, you toss the coin once again. That is how it happens. And we keep on repeating it until while the counter is less than 1000. And we keep on repeating it while it's less than 1000, or you can also say it until it becomes equal to 1000 or greater than 1000. Okay, so then we stop. So once you are done tossing the coin, so you can display the number of times you got the heads, and you can also display the number of times you got the tails. Okay. Okay, so now we can execute this code. So let's do the execution, save and run file. So the first execution, it resulted in 491 heads and 509 tails. Let us do another coin toss. 493, 507, 528, 472. Okay, so it's around uh, 500. If you increase the number of times you repeat this experiment, for example, if you repeat this experiment, say if you do 2000 coin tosses, okay, so you can toss the coin 2000 times. Let us not do the clear screen, the clear command window. Okay, let's come here. So let us do a coin toss. So we did this time 2000 times. So we got 996 heads and 1004 tails. If you do it again, 974, 1026, 991, 1009. You may not get exactly 1000 each, but you'll be like 1000 plus minus 30 kind of thing in that range. Okay, so you can keep on repeating it, and you can increase the number of times you toss the coin. So this is kind of virtual experiment where this is kind of a simulation of the outcome of coin tossing. It's not exactly like coin tossing or a very graphical simulation of coin tossing, but we are trying to simulate the outcome of coin tossing here. Okay. If you want to look at the way the while loop works, we can do that as well. Let us reduce the number to 20, and let us insert a breakpoint here, and let us do execute it in this particular mode. So you can see that if we enter this code, so head is equal 0, tails is equal 0, counter has been initialized to 0. Is the counter less than 20? Yes. So we enter the loop, and here we toss the coin. Okay, so what happened here? Are we done? Yes, we are done. Fortunately, we went out of this whole thing. I should have step in, step out. I shouldn't have stepped out. I should have stepped just. Okay. Let us do it again. Let us insert a breakpoint here, and let us start running. So let's do this step. Okay. So heads is initialized to 0, tails 0, counter 0. Now is counter less than 20? Yes, it is. Enter the loop. Do a toss. So toss has the value 1. So we've got a head. So it is true, increment heads, and then increment the counter. So we did one toss. Now go back to while, because counter is less than 20. It is 1 which is less than 20. Toss the coin a second time. Now we've got a 2 which is a tail. Increment tails. Increment the counter. It becomes 2. 2 is less than 20. So again toss the coin. We've got a head this time.
increment heads, increment the counter. It is 3 now, which is less than 20, so toss the coin once again. We've got a tail. Good. So increment the tails and toss the coin, increment the counter, and which is less than 20, so uh, toss the coin once again. Okay, so this time we've got another tail. Increment the tails, increment counter, so on and so forth. Like you can continue to do that up until 20. This is how your loop works, and then you will come here to display heads and display tails, and those values will be displayed. So you got 12 heads and 8 tails. Okay, so I hope this is clear. It wasn't that difficult to use a while loop in order to do something like this. The next thing that we want to simulate is simulating a die roll. Now what is a die? A die is called a छक्का. अगर आप लोगों ने कभी लूडो खेली हो ना, तो लूडो में हम छक्के को इस्तेमाल करते हैं. तो छक्का जब भी आप रोल करते हैं, सो उसमें यू हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स. 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं. नाउ कॉइन टॉस वाज इजी. वी हैड जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, 1 और 2. सो हमें सिर्फ एक कंडीशन चाहिए थी. इफ टॉस इज इक्वल टू 1 तो क्या करना है, अगर 1 नहीं है तो क्या करना है. बट डाई रोल इज अ बिट ट्रिकी. आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं. तो आप अगर छक्का रोल करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, like we have to simulate the roll. Let us do a clear roll. तो डाई रोल को किस तरह सिमुलेट करेंगे. सो व्हेन यू रोल अ डाई, सो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगी, आ सकती हैं. 1 2 3 4 5 6. सो हाउ डू यू जनरेट दोज आउटकम्स रैंडमली. ठीक है, ये सारे रैंडम भी होने. सो यू कैन यूज द रैंड integer function and you can just specify 6 as the maximum value. So you'll get 1 से लेके 6 तक आपको वैल्यूज मिलेंगी रैंडमली. अगर आप इस फंक्शन को कॉल करें ना, rand I6, so you'll get random values between 1 and 6. Okay, इसको आप ट्राई कर सकते हैं. So you are going to get random values between 1 and 6. ठीक है, अभी तक हमें 6 नहीं मिला, बट 6 भी आपको मिल जाएगा. ये 6 भी मिल गया. ठीक है, so in order to simulate a die roll, so this is the code that you need to do. ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो इसका मतलब ये कि आपने छक्का रोल किया, फेंका, और उसका कोई आउटकम आया. वो 1 से लेके 6 तक कोई भी आउटकम हो सकता है. ठीक है, अच्छा, अभी हमें 2 काम करने हैं. छक्का तो रोल कर लिया, अभी हमने ये ट्रैक लगाना है कि हमारे पास 1 कितनी मरतबा आया, 2 कितनी मरतबा आया, 3 कितनी मरतबा आया, 4 कितनी मरतबा आया, 5 कितनी मरतबा आया, 6 कितनी मरतबा आया. एक तो इस चीज़ का ट्रैक लगाना है, और दूसरा हमने इस प्रोसेस को फिर रिपीट करना है. यानी सिर्फ एक मरतबा डाई को नहीं रोल करना, छक्के को एक मरतबा नहीं फेंकना, बल्कि 6000 मरतबा, 10,000 मरतबा, 60,000 मरतबा फेंकना है, और हमने आउटकम को चेक करना है. ठीक है, तो ये कैसे करेंगे. तो पहले हम रिपीट करने का काम तो बड़ा आसान है. ठीक है, यानी ये, इसको आप अगर खैर यूं करें, इसको रोल के बजाय डाई का नाम दे दें. ठीक है, तो डाई का नाम इसको हम दे देते हैं कि जब भी हम डाई को रोल करेंगे तो उसका 1 से लेकर 6 तक कोई आउटकम आएगा, उसको हम वेरिएबल डाई में स्टोर करते हैं. ठीक है, अच्छा, कितनी मरतबा रोल किया है उसके लिए हम ये रोल्स एक वेरिएबल यूज़ करते हैं. तो इनिशियली 0 मरतबा हमने रोल किया है. ठीक है, मगर हम चाहते हैं कि हम इसको रोल करें से 6000 मरतबा हम रोल करना चाहते हैं. तो वो कैसे करेंगे. सो फॉर दैट वी नीड अ लूप, एंड वी वांट टू यूज़ द वाइल लूप अगेन. ठीक है, सो जब भी हम रोल करें, हम चाहते हैं कि हम ये जो रोल्स काउंट है इसको इंक्रीमेंट करें. ठीक है, रोल्स. सो रोल्स जो हमारा वेरिएबल है, ये बेसिकली स्टोर कर रहा है कि कितनी मरतबा हमने डाई को रोल किया है. ठीक है, सो इनिशियली हमने 0 मरतबा रोल किया है,
जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसका मतलब है कि एक मरतबा छक्का रोल हो गया एंड वी विल गेट सम आउटकम। जब ये हो जाए तो हम ये जो रोल वेरिएबल है इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक। अच्छा, अब ये प्रोसेस कितनी मरतबा चलना है? ये प्रोसेस 6000 मरतबा चलना है। तो वो हम कैसे चलाएंगे? वो हम लूप के ज़रिए चलाएंगे, और हम वाइल लूप यूज़ करना चाहते हैं। तो हम कहेंगे वाइल रोल्स इज लेस देन 6000। तो आप इस प्रोसेस को रिपीट करें। किस प्रोसेस को रिपीट करें? इस प्रोसेस को रिपीट करें। डाई को रोल करें, ठीक है, और फिर रोल्स जो वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट करें। ठीक। अच्छा, ये दिस इज़ द बेसिक आइडिया दैट वी वांट टू डू। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज़ ये है कि हम अ, ये रिकॉर्ड नहीं रख रहे कि कितनी मरतबा हमारे पास 1 आया, कितनी मरतबा 2 आया, कितनी मरतबा 3 आया, 4 कितनी मरतबा आया, 5 कितनी मरतबा आया, 6 कितनी मरतबा आया। तो उसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है ना कि हम वंस के लिए एक वेरिएबल रखें जिसमें हम वंस की तादाद का ट्रैक रखें। ठीक है, तो हमारे पास एक वेरिएबल होगा वंस के लिए, यानी काउंटर होगा वंस के लिए, फिर टूज़ के लिए एक काउंटर होगा, इनिशियली हम उसको 0 की वैल्यू दे रहे हैं। फिर थ्रीज़ के लिए हमारे पास एक काउंटर, कितनी मरतबा 3 आया। फिर फोर्स के लिए एक काउंटर होगा कि हमारे पास कितनी मरतबा 4 आया। फिर फाइव्स के लिए हमारे पास एक काउंटर होगा कि जी कितनी मरतबा हमारे पास 5 आया। और फिर छक्कों के लिए एक काउंटर होगा कि सिक्सेस कितनी मरतबा हमारे पास आया। ठीक है, तो एक तरीक़ाकार तो ये है कि अगर आपने इन सब का काउंट रखना है कि कितनी मतलब वंस, टूज, थ्रीज, फोर्स, फाइव और सिक्सेस आए, तो आप हर एक के लिए एक सेपरेट काउंटर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक लगाएंगे इफ़ डाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वंस को इंक्रीमेंट करो। अच्छा जी, एल्स इफ डाई इज इक्वल टू 2, उसका मतलब क्या है कि टूज को इंक्रीमेंट करो। ठीक है, अच्छा, एल्स इफ डाई इज इक्वल टू 3, उसका क्या मतलब है कि जी थ्रीज को इंक्रीमेंट करो। अच्छा जी, एल्स इफ डाई इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये है कि फोर्स को इंक्रीमेंट करें। एल्स इफ डाई इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स 5 को इंक्रीमेंट करें। एल्स इफ डाई इज इक्वल टू 6, इसका मतलब ये है कि 6 को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और उसके बाद एंड, देयर इज़ नो एल्स। ठीक है, तो ये एक तरीका कार है। आपने डाई को रोल किया तो 6 में से एक पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में कोई एक वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब अगर वो वैल्यू 1 है तो हम वंस को इंक्रीमेंट करेंगे ताकि हमें पता कितनी मतलब 1 आया। 2 है तो टूज़ को इंक्रीमेंट करेंगे ताकि पता लगे कितनी मतलब 2 आया, कितनी मरतबा 3 आया, कितनी मरतबा 4 आया, कितनी मरतबा 5 आया, कितनी मरतबा 6 आया। ठीक है, तो ये एक तरीक़ा कार है। तो फिर हमने रोल को इंक्रीमेंट किया और फिर हम वापस आए, देखा कि रोल्स 6000 मरतबा से कम है या उसके बराबर हो गया। तो जब तक हमने 6000 मरतबा रोल ना किया हो तब तक जो है हम डाई को रोल करते जाते हैं, और हमारे पास ये आउटकम्स आते जाते हैं, हम इन काउंटर्स को इंक्रीमेंट करते जाते हैं। ठीक है, ये एक तरीक़ा कार है। ठीक है, once you have rolled the die 6000 times, so then you can print all these you can display all these counters कि कितनी मरतबा ones आए हैं, ones display ones। ठीक है, then you can display twos। अच्छा जी, you can display twos, threes, fours, fives, sixes। ठीक है, so ones हो गया, now display twos, then display threes, then display fours, then display fives,
देन डिस्प्ले सिक्सेस। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यूल सी। अच्छा, डाई रोल हो रहा है 6000 मरतबा। डाई रोल काफ़ी टाइम लेता है। तो कितनी मरतबा वन आया छक्के, उस छक्के में 1008 मरतबा। दुक्कियाँ कितनी आई? 1035 मरतबा। थ्रिक्की आई जी 1011 मरतबा। चौके 981, पंजे 988। इवन यहाँ पे भी जो है ना, जिस तरह लूडो में छक्के कम आते हैं, तो यहाँ पर भी छक्के 970 सबसे कम है। लेकिन दिस वाज जस्ट वन एक्सपेरिमेंट। यू कैन डू अनदर एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे अब छक्के जी सबसे ज़्यादा आए हैं। ठीक है, so the point is that we can use Octave or computers to simulate the outcome of experiments like these, die roll, coin toss और things like these। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब ये जो तरीक़ाकार हमने अपनाया है, ये इतना अच्छा तरीक़ाकार नहीं है। ठीक है, इस काम को हम ज़रा ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो वो तरीक़ाकार क्या होगा ज़्यादा एफिशिएंट? वो कुछ हम यूँ कर सकते हैं। लेट अस सेव दिस फाइल एज, दिस इज़ डाई रोल 2। इसका नाम हम डाई रोल 2 रख लेते हैं। अच्छा, इसमें बाकी सारी कहानी तो वही है, लेकिन ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं ना, वो इस तरीके से नहीं करेंगे। ये 6 काउंटर्स जो हैं, वो कोई अच्छा तरीक़ाकार नहीं है, ये स्लो कर देता है प्रोसेस को। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ये हमारा सारा जो कोड है वो बड़ा स्लो हो जाता है। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे? तो करेंगे यूं कि हमारा जो काउंट होगा ना, उसके लिए से हम एक वेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, लेट दैट वेक्टर बी, let us call that vector as as what, as आउटपुट काउंट। ठीक है, उसको नाम चले हम आउटपुट काउंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, इट वुड बी अ वेक्टर। लेट अस इनिशियलाइज इट विद ज़ीरोज़, तमाम ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, और डायमेंशन क्या होगी? इट विल बी से रो वेक्टर, 1/6 साइज है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1/6 साइज का हमने एक वेक्टर क्रिएट किया और उसकी तमाम एंट्री ज़ीरोज़ हैं। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस फंक्शन ज़ीरोज़। सो इट क्रिएट्स बेसिकली अ वेक्टर ऑफ ऑल ज़ीरोज़। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। व्हेन यू से ज़ीरोज़ and zeros 1/6, so a row vector of with 6 columns would be created and all the entries would be zeros। ठीक है, अच्छा, हमने ये वेक्टर क्रिएट कर लिया। अब इसमें 6 एंट्रीज हैं। इस एंट्री का इंडेक्स क्या है? 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। अब हम काउंटिंग इस तरीके से करेंगे ना कि जब हमारे पास 1 आएगा तो हम इस एलिमेंट को एट इंडेक्स 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। जब हमारे पास छक्का आएगा तो हम एलिमेंट एट इंडेक्स 6 उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। जब हमारे पास चौका आएगा तो हम एलिमेंट एट इंडेक्स 4 को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम काउंट को महफूज रखेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमें एक तो वो 6 सेपरेट काउंटर्स नहीं चाहिए। ऑल्दो हमारे पास ये वेक्टर है और उसमें 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन नाम एक है, आउटपुट काउंट। ठीक है, हम सिर्फ इंडेक्स मुख्तलिफ यूज़ करेंगे और इंडेक्स को भी मुख्तलिफ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो इंडेक्स है वो हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल डाई में स्टोर हो जाता है। तो हम सिंपल ये काम कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इंक्रीमेंट आउटपुट काउंट। हमारे पास ये जो वेक्टर है आउटपुट काउंट, ठीक है, इसके एलिमेंट एट इंडेक्स डाई उसको आप इंक्रीमेंट कर दें। ठीक है, अच्छा, आई होप इसकी समझ आ रही है आपको। अगर नहीं आ रही तो दोबारा से देखें। जब हम डाई को रोल करते हैं, सो वी गेट वन ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। इनमें से कोई एक वैल्यू हमें मिलती है। वो वैल्यू हम स्टोर करते हैं वेरिएबल डाई में।
अब इस वेरिएबल में जो हमने वैल्यू स्टोर की उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज एन इंडेक्स फॉर दिस वेक्टर जो कि हमने क्रिएट किया है। ये जो वेक्टर हमने क्रिएट किया ना फॉर काउंटिंग, हम काउंट रखना चाहते हैं कि कितनी मरतबा वन आए, कितनी मरतबा जीरो टू आए, थ्री आए, फोर आए, फाइव आए, सिक्स आए। तो पहला जो तरीक़ाकार हमने अपनाया वो ये था कि हर एक काउंट के लिए हमने सेपरेट वेरिएबल डिक्लेयर किया, वंस के लिए वंस, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। उसमें मसला ये था कि हमें इन काउंट्स को अपडेट करने के लिए यहाँ पे वो इफ़ एल्स इफ का पूरा स्ट्रक्चर डालना पड़ा। ठीक है, तो वो ज़रा लंबा काम था और फिर यहाँ डिस्प्ले भी हमें उन सब को करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये काम ज़रा लंबा था, तो हमने उसको ज़रा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने का तरीकाकार क्या है कि वी डिक्लेयर्ड अ वेक्टर बाय द नेम ऑफ आउटपुट काउंट, जिसमें हम आउटपुट काउंट रखना चाहते हैं। इट इज़ अ वेक्टर ऑफ साइज 1/6, रो वेक्टर विद 6 कॉलम्स, और उसकी तमाम इनिशियल वैल्यूज जो हैं ज़ीरोज़ हैं। जब भी हम डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास 1 से 6 के बीच एक वैल्यू आती है। अच्छा, अगर वैल्यू 1 हो तो हम चाहते हैं कि ये जो आउटपुट काउंट है ना, उसके इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है हम उसको इंक्रीमेंट करें। तो वो इंडेक्स ऑलरेडी डाई वेरिएबल में स्टोर होता है। तो जब हम यहाँ कहते हैं ना कि प्लस प्लस आउटपुट काउंट डाई, तो डाई वेरिएबल में जो भी वैल्यू होती है इट एक्ट्स लाइक एन इंडेक्स हियर। तो उस नंबर का एलिमेंट इस वेक्टर में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अगर वो 6 हो तो 6 इंक्रीमेंट, ये वाला एलिमेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर वो 3 हो तो ये वाला, 2 हो तो ये वाला इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो हर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो उस नंबर का जो वो इंडेक्स है उसका काउंट अपने अंदर महफूज रखता है। तो हमें पता चलता है कि कितनी मरतबा 1 आया, कितनी मरतबा 2 आया, कितनी मरतबा 3 आया। ठीक है, एंड देन वी कैन डिस्प्ले दैट इन द एंड। आखिर में हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिस्प्ले क्या करेंगे, हम सिर्फ आउटपुट काउंट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो जब आप ये डिस्प्ले कर देंगे तो हमारे पास वंस, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स सब की वैल्यू आ जाएगी। एंड लेट अस वेरीफाई कि ये काम करता है या नहीं। अच्छा जी, अगेन ये टाइम तो ले रहा है। तो ये हमारे पास काउंट है, 1004 मरतबा 1 आया, 974 मरतबा 2 आया, फिर 3, 4, 5, छक्का इतनी मरतबा आया। फिर से आप रन करें। ठीक है, तो 1015 मरतबा 1 आया, 968 टाइम्स 2, 1021 टाइम्स हमारे पास 3 आया, और 982 times we got 4, then 1039 times we got 5, and then 975 times we got 6. ठीक है, so this is how it works. Now let us, I guess ये जो प्रॉब्लम है डाई रोल की सिमुलेशन की, so we have looked at it using two different methods. ठीक है, so I hope this is clear. Now the last thing that we want to do is we want to find all the prime numbers between 2 and n. ठीक है, where n, capital N is like the user specifies it, और हम 2 से लेके n तक तमाम numbers को उनमें से जितने भी हमें प्राइम नंबर्स मिलें तो वो सब हम प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। ये हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू script file, let us save it, or let us name it as n primes. ठीक है, n primes, so we want to find out the first n primes. अच्छा, we can close this file as well. Now you know what a prime number is. ठीक है, I hope you remember कि prime number क्या चीज़ होती है. Okay, and we also know how to find a prime number. ठीक है, आप पुराने कोड से मदद ले सकते हैं। यहाँ हम इस तरह करते हैं कि फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, but आप यहाँ you should pay some attention to the way I solve this problem. It would help you. So this is a slightly different problem. ठीक है, so here we have to like
do a double repetition kind of thing. So we have to repeat a process in order to find out whether a particular number is a prime number or not. And then we have to repeat this process not just for one number but for many numbers. The previous code that we wrote, that was good enough for just uh, one one number. If we had one number, so we could find out कि वो नंबर प्राइम है या नहीं. बट यहाँ हमने उस प्रोसेस को रिपीट करना है बहुत सारे नंबर्स के लिए. ठीक है. अच्छा जी, तो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने एक नंबर, किसी भी नंबर को अगर हमने मालूम करना हो कि वो प्राइम है या नहीं, तो उसका प्रोसेस क्या होता था. तो से वी हैव अ नंबर बाय द नेम ऑफ नम. ठीक है. इट कैन बी एनी नंबर. Say for example we have 5 and we want to find out whether 5 is a prime number or not. So हम क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते थे. तो 5 की प्राइमलिटी को जांचने के लिए हम 5 को डिवाइड करते थे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड देन गोइंग अप until हाफ ऑफ 5. ठीक है. या starting from 2 and going up until half of num. Let us select another number, say 19. ठीक है. 19 को हम पता लगाना चाहते हैं कि 19 प्राइम नंबर है या नहीं, say for example. तो कैसे पता लगाएंगे. तो 19 को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, 7, 8, 9, 9 तक. ठीक है. 9 से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर इनमें से किसी नंबर से भी 19 डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स 19 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. और अगर वो नहीं होता डिवाइड, तो दैट मीन्स के 19 इज़ अ प्राइम नंबर. ठीक है. अच्छा, सो दैट इज़ हाउ वी डिटरमिन के आया 19 प्राइम नंबर है या नहीं है. ठीक है. सो लेट अस राइट दैट कोड. तो ये वाला कोड हम लिख लेते हैं. ठीक है. अच्छा जी, तो ये कोड हम कैसे लिखेंगे. तो ये हम यूँ लिखते हैं. से वी नीड टू यूज़ सम लूप. अच्छा, हमने 19 को या इस नम को डिवाइड करना है. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड गोइंग अप अंटिल नम के हाफ तक. ठीक है. तो हमने इसको डिवाइड करना है बाय this number div which starts from 2 and goes up until num by half. तो हम num को डिवाइड करना है by div and we need to look at the remainder. ठीक है. So r is equal to the remainder हम मालूम करते हैं using the mod function. इसको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं. ठीक है. So हम num को डिवाइड करते हैं by div, और div is not just one number, it is basically a vector. ठीक है. जो कि हम जनरेट करते हैं यूजिंग दिस स्टेटमेंट, और इसकी इनिशियल वैल्यू 2 है और फाइनल वैल्यू नम बाय 2. ठीक है. सो हम इसको बारी बारी नम को डिवाइड करते हैं बाय डिव एंड वी लुक एट द रिमाइंडर. अब अगर रिमाइंडर कहीं पे भी हमें ज़ीरो मिल जाता है, इफ़ r इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ द कंडीशन वी आर इंटरेस्टेड इन. कहीं पे भी हमें ज़ीरो मिल जाता है, तो हम यहाँ पे से अपने पास कहीं पे रख लेते हैं इसका रिकॉर्ड कि जी डिवाइज़र हमें एक डिवाइज़र मिल गया. ठीक है. या फैक्टर हमें मिल गया. ठीक है. सो लेट अस कॉल इट एज फैक्टर्स. ठीक है. कितने फैक्टर्स हमें मिले हैं. तो इनिशियली से वी हैव ज़ीरो फैक्टर्स, लेकिन अगर हमें कहीं पे मिल जाता तो हम फैक्टर्स को इंक्रीमेंट कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, हमें अगर एक भी फैक्टर मिल गया ना, सो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है नम, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है. इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, इस लूप में हम सिर्फ नम को चेक कर रहे हैं कि वेदर नम इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट. ठीक है. अच्छा, और वो हम कैसे चेक करते हैं. तो वो हम इस तरीके से चेक करते हैं कि हम नम को डिवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड गोइंग अप अंटिल हाफ ऑफ नम एंड वी लुक एट द रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर हमें एक भी मर्तबा ज़ीरो मिल जाता है, दैट मीन्स के नम को कोई एक नंबर डिवाइड करता है बिटवीन 2 एंड इट्स हाफ.
ठीक है, तो हम ये फैक्टर्स को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, इसको इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद हमें नम को मज़ीद और नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या इस डिस्कशन को रहने देते हैं। लेट अस डू दैट के वी फाइंड आउट कि नम को कितने नंबर्स डिवाइड करते हैं विद इन दिस रेंज 2 टू नम बाय हाफ। ठीक है, अच्छा, तो ये लूप जो है वो ये काम करती है। इस लूप से जैसे हम बाहर आएं, अच्छा, इफ़ फैक्टर्स की तादाद अगर फ़र्ज़ किया वो ज़ीरो है, इफ़ फैक्टर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी नम का कोई फैक्टर नहीं है इस पूरी रेंज में, 2 से लेके नम के हाफ तक अगर हमें कोई भी फैक्टर नहीं मिला तो ये फैक्टर्स काउंट ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका फिर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है num, it is a prime number. ठीक है, so we can say display num, and we can also say display is a prime number. Num is a prime number. ठीक है, अच्छा, we can say that, but this is just for one number. This is just for one number, num. ठीक है, this is just for one number, num. ये जो कोड लिखा है हमने, ये सिर्फ इस नंबर का पता बताएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इस नंबर का बताएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ये जो नंबर है 19, इसका बताएगा। ठीक है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इसका सही पता बताता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। सो वी कैन सी दैट 19 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा, similarly we can test another number, say 17. That would also be a prime number. 17 is a prime number. ठीक है, अच्छा, हमारा काम क्या था? हमारा काम ये था कि we wanted to find out all the prime numbers between 2 and n. Say we have capital N. Capital N हम लिखते हैं जी 5000। सो हम 2 से लेके 5000 तक तमाम नंबर्स का पता लगाना चाहते हैं कि उनमें हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू। सो अब हमारे पास ये जो नम है ना, दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल वैल्यू। ये जो हमारे पास नम वेरिएबल है, हेयर इट इज़ नो लॉन्गर अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, नाउ it is a range of values or vector of values starting from 2, ठीक है, starting from 2 going up until 5000। तो हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करना है, यानी अब हमने इस पूरे कोड को रिपीट करना है बार बार, सिर्फ एक वैल्यू के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए। 2 से लेके 5000 तक की वैल्यूज़ के लिए हमने इस पूरे कोड को रिपीट करना है। जब भी आपने किसी कोड को रिपीट करना हो तो तब आपको लूप यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे कोड को रिपीट करना चाहते हैं, सो यू नीड टू यूज़ द फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, फ़िलहाल मैं फॉर लूप को यूज़ करता हूँ, आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट फॉर मेकिंग थिंग्स ईजी फॉर यू राइट नाउ हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये जो नम है ये स्टार्ट होगा 2 से और ये जाएगा अप अंटिल 5000 विच इज़ कैपिटल N। ठीक है, और हम इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहते हैं फॉर ईच ऑफ दीज वैल्यूज़ ऑफ नम। ठीक है, फॉर ईच ऑफ दीज वैल्यूज़ ऑफ नम हम इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहते हैं। तो अब हमारे पास नम सिर्फ 17 नहीं है। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सो नम हमारे पास नाउ इट इज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2 and going up until 5000।
So this can be 5000 or any other number. अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू फाइंड आउट 2 से लेके 5000 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू फाइंड आउट ऑल दोज प्राइम नंबर्स, या से 1000 तक, इनिशियली हम 1000 तक देख लेते हैं कि 2 से लेके 1000 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं. So you need to repeat this process of determining whether a number is a prime number or not. You need to repeat it uh, for all these numbers starting from 2 up until capital N, and this is how you do it. तो अब हम दो फॉर लूप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. ये जो फॉर लूप है ये तो हमें चाहिए होती है सिर्फ एक नंबर का पता लगाने के लिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं. अब हम सिर्फ एक नंबर को नहीं देखना चाहते कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, हम बहुत सारे नंबर्स को 998 नंबर्स को देखना चाहते हैं कि उसमें से कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर है. तो हम ये प्रोसेस रिपीट करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव नाउ टू लूप्स. दिस इज कॉल्ड द आउटर फॉर लूप एंड दिस इज कॉल्ड द इनर फॉर लूप. ये जो लूप है ना, ये वाला, ये इस लूप के अंदर है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनर फॉर लूप एंड दिस इज आउटर फॉर लूप. ठीक है. इसको नेस्टिंग कहते हैं. एक लूप के अंदर दूसरे लूप को डालना, इसको नेस्टिंग कहते हैं. ठीक है. तो आप किसी भी लूप को किसी दूसरे लूप के अंदर नेस्ट कर सकते हैं. फॉर लूप को फॉर लूप के अंदर, या वाइल लूप को वाइल लूप के अंदर, या फॉर लूप को वाइल लूप के अंदर, या वाइल लूप को फॉर लूप के अंदर. सो यू कैन डू ऑल दिस नेस्टिंग. ठीक है. वो आप किसी भी लूप को कर सकते हैं किसी भी दूसरे लूप के अंदर. ठीक है. नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस कोड एंड सी इफ इट रन्स फाइन. ये ठीक काम करता भी है या नहीं. ठीक है. So save and run and then let us see. अच्छा जी, हाँ जी, ये मालूम कर रहा है प्राइम नंबर्स को. ठीक है. सो आई गेस वी आर डन. हमारे पास दो भी प्राइम नंबर है. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 43 और फिर 47, 53, 59, 61. तो तमाम प्राइम नंबर्स जो भी इस रेंज में हैं, 0 से लेके 1000 तक, वो तमाम प्राइम, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्राइम नंबर्स, काफ़ी सारे प्राइम नंबर्स हैं. तो वो तमाम प्राइम नंबर्स इसने हमें मालूम करके दे दिए. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कोड. ठीक है. इसमें हम और कुछ नहीं करे, स्टेप बाय स्टेप हमने उस प्रोसेस को जो कि एक नंबर की प्राइमैलिटी मालूम करने के लिए था, उसको हम रिपीट कर रहे हैं फॉर रेंज ऑफ नंबर्स. ठीक है. So this code was, we wrote this code for determining whether a single number is prime number or not. And we repeated this process for a sequence of numbers. ठीक है. 2 से लेके n तक, कैपिटल N तक के नंबर्स के लिए हमने इसको बस रिपीट किया. दैट इज व्हाट वी डिड. ठीक है. इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया. अच्छा जी. वैसे हम एक और काम भी कर सकते हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, सो इसको पढ़ना ज़रा मुश्किल है, मतलब इट विल रिक्वायर सम स्क्रॉलिंग. तो हम वही वाला काम कर सकते हैं कि वी कैन अपेंड द प्राइम नंबर्स दैट वी फाइंड टू एन अरे. ठीक है. सो वी कैन क्रिएट अ वेक्टर. वी जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं इन अ वेरिएबल प्राइम्स. इनिशियली इसमें हम सिर्फ 2 को स्टोर कर लेते हैं. ये 2 हमारा एक प्राइम नंबर है. ठीक है. 2 इज़ आवर फर्स्ट प्राइम नंबर. एंड देन इसको हम स्टार्ट ले लेते हैं फ्रॉम 3. ठीक है. लेट अस, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमने प्राइम्स में डाल दिया है, एंड यहाँ हम फिर 3 से स्टार्ट ले लेते हैं. व्हेन वी फाइंड अ प्राइम नंबर वी डोंट डिस्प्ले इट. हम उसको डिस्प्ले नहीं करते. ठीक है. हमें पता चल गया कि नम इज़ अ प्राइम नंबर, तो हम उसको, ये जो प्राइम्स वेक्टर हमारा है, उसके साथ अपेंड कर देते हैं. ठीक है. सो वी से प्राइम्स इज इक्वल टू primes and num. So this is the new prime number that we found out. So इसको हमने append कर दिया with the existing prime numbers. ठीक है. When we are done,
and we have all the prime numbers in that range, so we just say display primes. ठीक है, so we just say display primes. Now let us execute this program. अच्छा, let's see if we have anything. So it's working. So again, ये भी इतना, लेकिन उस फिर भी उससे बेहतर है. So these are all the primes. So कितने primes हैं हमारे पास between 1 and 1000? So we have 168 primes, prime numbers. यानी पहले 1000 नंबरों में हमारे पास 168 primes हैं. And you can increase this number, like you can say 2000 तक देख लें. ठीक है, अच्छा जी. So it does take some time to find out all the prime numbers. So पहले 2000 नंबरों में कितने प्राइम नंबर्स हैं? Let us see. तीन सौ तीन. सो 168 और फिर 303. सो थोड़े से कम हुए हैं, यानी दूसरे हजार में इतने ज़्यादा प्राइम नंबर नहीं है. अगर आप 3000 में देखें तो वो प्रोपोर्शनली फिर इंक्रीज नहीं होते. पहले में 168 थे, और फिर वो प्रोपोर्शनली यहाँ पे 303 है. सो 303 माइनस 168 माइनस 168. सो दूसरे हजार में 135 हैं. ठीक है, अच्छा जी. अब 3000 में कितने प्राइम नंबर्स मिलते हैं? यानी 2 से लेके 3000 तक, या पहले जो 3000 नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से कितने प्राइम नंबर्स हैं, से इफ़ यू वांट टू नो दैट, तो आप देखेंगे कि प्राइम नंबर्स जो है ना, वो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएं तो प्राइम नंबर्स जो हैं वो कम होते जाते हैं. ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है. सो यू कैन वेरीफाई इट फॉर लार्ज नंबर ऑफ नंबर्स. ठीक है, इस प्रोग्राम को हम मज़ीद भी मॉडिफाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट के इनकी तादाद कैसे वेरी करती है. सो अभी 430 हो गए हैं, तो पहले 2000 में हमारे पास तादाद थी 303. ठीक है, 303. सो 127. सो पहले हमें 168 प्राइम्स मिले, फिर हमें 135 प्राइम नंबर्स मिले. ठीक है, आई गेस, और फिर हमें 127 प्राइम नंबर्स मिले. तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कम होते जाएंगे, ये जो प्राइम नंबर्स की तादाद है. ठीक है, again this was not the purpose of this code. The purpose was that you should learn how to solve problems like these by using these different features of Octave language. तो कौन से फीचर्स हमने यूज़ किए? हमने वो इफ़ डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया, हमने रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया जिसके ज़रिए से आप किसी कोड को बार बार रिपीट कर सकते हैं, और हमने नेस्टिंग सीखी कि कैसे आप एक फॉर लूप को दूसरे फॉर लूप में नेस्ट कर सकते हैं. ठीक, सो वी लुक्ड एट दैट एज वेल. सो आई होप लाइक दिस इसको आपने समझ लिया होगा इन सारी चीज़ों को, एंड दिस वुड बी इनफ. आप इसकी प्रैक्टिस करें, एंड वट एवर programs we wrote in these lectures, so as an assignment and as a practice, write these by yourself and run these programs, and test this code, and you can try solving some other problems. Okay, so you can do that. So that's all that we have for now, and inshallah, uh, I hope like you have understood and absorbed this material. You will have time
before the exam. If you need more time, we can extend that time. But I want you to go through this material and absorb this material as best as you can. Okay. So see you later.